Hello everyone, welcome back to my channel. So, in my last video, we have covered all the definition pertains to bank guarantee. Now, we will start Article 3, that is interpretation. So, here we start Article 3, point number 1. Point number 1 says branches of a guarantor in different countries are considered to be a separate entities. What does it mean? It means that each branch operates independently and is treated as a distinct entity. Although they are part of the same organization, the branches are legally and financially separate from each other. सो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि कोई भी बैंक जिसकी ब्रांच किसी दूसरी कंट्री पे है तो वो एक सेपरेट एंटिटी है। इसका मतलब है कि वो ब्रांच इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और भले ही वो एक सेम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, लेकिन वो लीगली एंड फाइनेंशियली पर्सपेक्टिव से एक दूसरे से अलग होते हैं, सो वी कैन कंसीडर इट एज अ सेपरेट एंटिटी। सो नाउ सेकेंड पॉइंट. In this particular point, it means that when we use the term guarantee, it includes not only the original guarantee but also a counter guarantee and any amendment made to either of them. Similarly, when we refer to a guarantor, it includes not only the original guarantor but also a counter guarantor. So, lastly, we can say that if it is mentioned as a beneficiary, then it includes the party for whom a counter guarantee is issued. So, this particular point will understand from a example also. So here in this example, you can see if we can use the term guarantee. So it includes not only the original guarantee, also a counter guarantee. So we can see there is a party X who is actual applicant and party Y who is a actual beneficiary. But for counter guarantee, if we will talk about, then party X is a applicant of counter guarantee and bank A is a guarantor of counter guarantee and beneficiary who bank B is the beneficiary of counter guarantee. And if we will talk about bank guarantee, then the beneficiary of a bank guarantee is a party Y and guarantor is bank B and applicant of bank guarantee is बैंक ए। तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि जब भी हम गारंटी टर्म यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ओनली ओरिजिनल गारंटी नहीं बल्कि काउंटर गारंटी भी होगा। और सिमिलरली अगर हम गारंटर टर्म यूज़ करते हैं तो वो काउंटर गारंटर को भी इंक्लूड करता है। और जब हम बेनिफिशियरी को रेफर करेंगे तो वो उस पार्टी को भी इंक्लूड करेगा जिसके लिए काउंटर गारंटी इशू किया गया है। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ जो काउंटर गारंटी है उसके लिए एप्लीकेंट है पार्टी एक्स एंड गारंटर है बैंक ए और बेनिफिशियरी है बैंक बी। लेकिन अगर हम बैंक गारंटी ओरिजिनल बैंक गारंटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा बेनिफिशियरी जो है वो पार्टी वाई है, गारंटर बैंक बी है और जो एप्लीकेंट है वो बैंक ए है। So now third point. Um, According to third point, if there is a requirement to present one or more originals of an electronic document, so that particular requirement is considered fulfilled when you present just one electronic document. सो थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसका एक या उससे ज़्यादा
प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हम एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके भी फुलफिल कर सकते हैं. So, point number four. So, whenever we want to determine the start and end date of any period, then the term used firstly like from, to, until, till, and between. So, these all terms include that particular date. Uh, point number two. So, if we will use the term before and after, so it will exclude the that particular date. I'll explain you both the points with example. So here we can see the example. So first one is 2 days from 27th May. Then our day 1 will be 27 May and day 2 will be 28th May, because here we are including that particular date. In second example, 2 days before 27th May, then we'll treat day 1 as 28th May and day 2 will be 29th May. Here we are excluding this 27th May. Point number 5. Point number 5 says if we will use the term within for a calculation of any period, then we will exclude that particular date or event. But we will include that particular date when we will calculate the total time duration. सो पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है कि जब भी हम विद इन टर्म्स यूज़ करेंगे किसी भी पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए, तो उस सिचुएशन में वो पर्टिकुलर पीरियड हम एक्सक्लूड करेंगे जब हम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब हम टोटल ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे तब हम वो डेट इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, we can see here within 2 days from 27th May. So 27 May, we will exclude it, because here what we are doing, we are just calculating the period. So our day 1 will be 28th May and day 2 will be 29th May. But for total time duration, we will include the date 27th May. सो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि अगर जैसे यहाँ पर दिया है विद इन 2 days फ्रॉम 27th में, तो जो 27th में है, जब हम पीरियड कैलकुलेट करेंगे उस सिचुएशन पे हम इस डेट को एक्सक्लूड करेंगे और जो हमारा डे 1 होगा वो 28th में होगा और डे 2 29th में होगा. लेकिन जब हम टोटल टेनर की बात करेंगे, टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे, तो उसमें हम 27 मई को भी इंक्लूड करेंगे. Now we'll discuss last point of Article 3. So this is the sixth point. So according to this point, when terms like first class, well-known, qualified, independent, official, competent, or local are used to describe the issuer of a document, it means that any issuer except the beneficiary or the applicant can issue that document. For example, if a document requires an independent or qualified issuer, it means that the issuer must be someone other than the beneficiary or the applicant. सो पॉइंट नंबर 6 ये बोलता है कि जब भी हम टर्म यूज़ करेंगे लाइक फर्स्ट क्लास, वेल नोन, क्वालिफाइड, इंडिपेंडेंट, ऑफिशियल, कॉम्पिटेंट और लोकल, तो इशूअर ऑफ डॉक्यूमेंट कोई भी पार्टी हो सकती है एक्सेप्ट द बेनिफिशियरी और द एप्लीकेंट. So with this last point we have completed article 3, that is interpretation. Next we'll start article 4 in our next video. So thank you for watching and don't forget to subscribe, like and share this video with others who might find it helpful. So stay tuned for more content coming soon. Thank you.